अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अजय। मेरा सवाल है, जन्नत में जाने के लिए इस्लाम कबूल करने का ज़रूरी है क्या? The brother asked the question that is it compulsory to accept Islam to go to Jannah? It is like asking that should I get good marks to pass the examination? If you want to pass the examination, you should minimum get passing marks. As far as to go to Jannah, the criteria to go to Jannah is mentioned in Surah Al-Asr, chapter number 103, verse number 1 to 3, which says, Wal Asr, Innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu, wa amilu salihati, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. By the token of time, man is verily in a state of loss, except those who have faith, those who have righteous deeds, those who exhort people to truth, and those who exhort people to patience and perseverance. For any human being to go to Jannah, minimum 4 criteria are required. Minimum. First is having faith, having Iman. In Iman will come believing in one God, believing Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is the last messenger, etc., etc. Second is righteous deeds. Besides having faith, Iman ke alawa, righteous deeds, amal salihat. The third is watawasaw bil haqq, inviting people to truth. And the fourth is inviting people to patience and perseverance. For any human being to go to Jannah, minimum 4 criteria is required. And if Allah wishes, He may forgive any sin. But the sin of shirk, He'll never forgive. Allah says in Surah Nisa chapter 4 verse 48 and Surah Nisa chapter 4 verse 116 that if Allah pleases, He may forgive any sin, but the sin of shirk He will never forgive. For anyone who has committed shirk, he has committed a heinous sin. Shirk is a major sin. If you do shirk, there's no chance of entering Jannah at all. Other sin, if Allah wishes, He may forgive. But for being sure that you'll go to Jannah, minimum 4 criteria is required: Iman, righteous deeds, exhorting people to the truth, and exhorting people to patience and perseverance. भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, Do you want to enter Jannah? क्या आपको जन्नत में जाने क्या है? हाँ, जाने क्या आपको? मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, मेरे दिल से बोल रहा हूँ, मैं कलमा पढ़ के दो। माशाअल्लाह, तो जन्नत जाना है। The brother wants to go to Jannah and he wants to read the kalma. Is anyone forcing you to accept Islam, brother? क्या कौन आपको जबरदस्ती कर रहा है? कुछ भी नहीं। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई माली दबाव, इकोनॉमिक प्रेशर? नहीं। कोई आपको जबरदस्ती कर रहा है, जोर जबरदस्ती? कोई भी नहीं। आप आपके दिल से कबूल करना चाहते? या सब जन अच्छा बात सिखा रहे हैं इस्लाम में, मेरे को इसके लिए पसंद हो गया, एक ही भगवान है। MashaAllah, brother is saying that such good teachings are there in Islam, and in Islam there's only one God, therefore he wants to accept. आप मानते हैं क्या बुत परस्ती गलत है? हाँ, बुत परस्ती, आइडल वर्शिप, हाँ गलत है। गलत है। आप मानते हैं क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है अल्लाह के, आप मानते? मानते। माशाअल्लाह। सो मैं इंशाअल्लाह मैं कलमा पढ़ाऊंगा और आप उसको दोहराए, और इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा अल्लाह आपको जन्नत में डाले। यस, थैंक यू। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा का कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुके? सर जी हाँ। मेरे को एक नाम रख लो। अच्छा, The brother wants to suggest a name. रोड पे एक नाम पूछते हैं, इसके लिए मेरे को भी बोलने नहीं आ रहा हूँ। आपका नाम क्या है अभी? मेरा नाम अजय कुमार। अजय कुमार? या भाई साहब का नाम अजय कुमार है, तो मैं ऐसे कोशिश करूंगा आप अपने आप को अब्दुल्ला बुला सकते। अब्दुल्ला मतलब द सर्वेंट ऑफ गॉड, यानी अल्लाह के बंदे को कहते अब्दुल्ला, सर्वेंट ऑफ गॉड। और मैं दुआ करूंगा कि अब्दुल्ला इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको जन्नत नसीब फरमाए। आमीन। थैंक यू। आमीन। आपके लिए दुआ मांगेगा, इसकी जन्नत के लिए दुआ मांगेगा। थैंक यू।